Outlook HR Solutions, your recruitment partner. For information related to HR management, jobs, and interviews, subscribe to our channel, click the bell icon, and select all. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentences. Okay. So each word is divided into 2 parts with the help of apostrophe symbol. So we need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. First word is accustom, to make someone or something familiar with or used to a particular situation. accustom को हम हिंदी में आदत कहते हैं, उर्दू में आदत डालना, तेलुगु में अभ्यस्तम चेयु. For example, living in a new country, it took time to accustom herself to the local customs. Next word is achieve, to successfully bring about or reach a goal through effort or skill. achieve को हम हिंदी में प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में हासिल करना, तेलुगु में साधिंचडानी की. For example, with hard work and dedication, she was able to achieve her dream of becoming a published author. Next word is acknowledge, recognize or admit the existence or truth of something. Acknowledge को हम हिंदी में स्वीकृत कहते हैं, उर्दू में मानना, तेलुगु में अवगहिंचबडिना. For example, the president acknowledged the contributions of the volunteers during his speech. Next word is acquaint, to make someone aware of or familiar with something. acquaint को हम हिंदी में परिचित कहते हैं, उर्दू में मुतारिफ करना, तेलुगु में परिचयम चेयु. For example, let me acquaint you with the rules before we start the game. Next word is acquire, to obtain or gain possession of something through one's efforts. acquire को हम हिंदी में प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में हासिल करना, तेलुगु में पोंदु. For example, he worked hard to acquire the skills needed for the job. Next word is acquisition, to act of acquiring or gaining possession of something. Acquisition को हम हिंदी में प्राप्ति कहते हैं, उर्दू में हासिलकार, तेलुगु में दक्षता. For example, the company announced the acquisition of a new technology firm. Next word is acquit, to declare someone not guilty of a criminal charge. acquit को हम हिंदी में बरी करना कहते हैं, उर्दू में बरी करना, रिहा करना, तेलुगु में मुक्ति परचु. For example, the jury decided to acquit the defendant due to a lack of evidence. Next word is acrobat, a person skilled in performing gymnastic feats or in feats requiring agility and coordination. एक्रोबैट को हम हिंदी में, उर्दू में, तेलुगु में एक्रोबैट ही कहते हैं. For example, the circus featured an amazing acrobat who performed breathtaking stunts. Next word is activate, to make something active or operational. Activate को हम हिंदी में सक्रिय करना कहते हैं, उर्दू में शुरू करना, तेलुगु में सक्रियम चेयु. For example, press the button to activate the alarm system. Next word is active, engaged in action, characterized by energetic activity. Active को हम हिंदी में सक्रिय कहते हैं, उर्दू में फाइल, चुस्त, तेलुगु में सक्रिया. For example, he leads an active lifestyle, participating in various sports and outdoor activities. Next word is actual, existing in fact, real or factual. Actual को हम हिंदी में वास्तविक कहते हैं, उर्दू में हकीकी, तेलुगु में वास्तवम. For example, the actual number of participants was higher than expected. Next word is actually, in fact, truly, used to emphasize the truth of something. Actually को हम हिंदी में वास्तव में कहते हैं, उर्दू में हकीकत में, तेलुगु में वास्तवंगा. For example, she wasn't angry. Actually, she was quite happy with the outcome.
Next word is acumen. The ability to make good judgments and quick decisions. Keen insight. acumen को हम हिंदी में बुद्धिमत्ता कहते हैं. उर्दू में फितरत सलाहियत. तेलुगु में विवेक शक्ति. For example, her business acumen led to the success of the company. Next word is adamant. Refusing to be persuaded or to change one's mind. Unyielding. एडमेंट को हम हिंदी में अडियल कहते हैं. उर्दू में बात पर अड़े रहना. तेलुगु में मुंडिगा. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्लीज ही रिमेन्ड एडमेंट अबाउट हिज डिसीजन टू रिजाइन. नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट. टू मेक सूटेबल और फिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. टू एडजस्ट न्यू कंडीशंस. अडेप्ट को हम हिंदी में अनुकूलित कहते हैं. उर्दू में माहौल में घुल मिलना. तेलुगु में अनुकूलिंचु. फॉर एग्जाम्पल, plants adapt to changes in their environment to survive. Next word is adaptable. Capable of adjusting to different conditions. Flexible. Adaptable को हम हिंदी में अनुकूलनशील कहते हैं. उर्दू में घुल मिलना. तेलुगु में अनुकूलिंचे. For example, a successful entrepreneur is often adaptable to changing market trends. Next word is addict. A person who is addicted to a particular substance or activity. Addict को हम हिंदी में लत कहते हैं. उर्दू में आदत. तेलुगु में आसक्ति तो. For example, the rehab center helps individuals overcome their challenges as they strive to recover from being an addict. Next word is additional. Added or extra. Supplementing what is already present or available. एडिशनल को हम हिंदी में अतिरिक्त कहते हैं. उर्दू में इजाफा. तेलुगु में अदनपु. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एडिशनल फंडिंग टू बी completed on time. Next word is address. The particulars of the place where someone lives or organization is situated. To speak or write to. एड्रेस को हम हिंदी में पता कहते हैं. उर्दू में पता. तेलुगु में चिरुनामा. For example, she wrote her address on the envelope before mailing the letter. Next word is adept. Highly skilled or proficient in a particular activity or field. Adept को हम हिंदी में कुशल कहते हैं. उर्दू में माहिर. तेलुगु में निपुणा. For example, he is an adept musician playing multiple instruments with ease. Next word is adequate. Sufficient or satisfactory in quantity, quality और degree. Adequate को हम हिंदी में पर्याप्त कहते हैं. उर्दू में मकूल. तेलुगु में साक्षरమైన. For example, the team ensured they had an adequate supply of materials before starting the construction project. Next word is adhere. To stick to or follow closely. To be devoted or loyal to. adhere को हम हिंदी में पालन करना कहते हैं. उर्दू में बात मानना. तेलुगु में अनुगुणम चेयु. For example, it is important to adhere to the safety guidelines while operating heavy machinery. Next word is adjacent. Next to or adjoining something else. Neighboring. Adjacent को हम हिंदी में पास कहते हैं. उर्दू में बाजू. तेलुगु में प्रक्कना. For example, the two houses are adjacent to each other, sharing a common wall. Next word is adjoining. Contiguous or touching. Sharing a common border or edge. Adjoining को हम हिंदी में संबद्ध कहते हैं. उर्दू में मुतासिल. मिले हुए. तेलुगु में प्रक्कना. For example, the hotel rooms are often designed with adjoining doors for families traveling together. Next word is administer. To manage or be responsible for the implementation of something. To give a drug or treatment. Administer को हम हिंदी में प्रशस्तित कहते हैं. उर्दू में इंतज़ाम करना. तेलुगु में निर्वहिंचु. For example, the nurse will administer the medication to the patient at the prescribed time.
Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.